पढ़ पा रहे हो ना क्या लिखा है बोर्ड में? ये ऑपोजिट आ रहा है। Wait for 2 more minutes. A student will join. Okay. Okay. My voice is clearly. Hello. My voice is clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, today we discussed about course 3. Okay. In previous class we discussed about uh, motivation, and we just complete our first unit, that is what is learning and the types of learning. Okay. Now we move towards our second unit, which is a factor that influencing the learning. Okay. So second unit is factor influencing learning. So, what are the factors that influence the learning? But the process of the learning is influenced by several factors. Like one is the motivation, and another different kinds of strategies that we use in our classroom or other learning area, which actually influence the learning process. So now we talk about the motivation. So there are several factors that influence the learning process. So we broadly categorize these factors into two groups. Like one is motivation, and second one is like few strategies. Raja phone karo se. Student, please wait for few minutes. Raja phone karo se. আমি আমার ফোন করেছি কিছু বলছো? কিছু বলছো? ঠিক আছে, স্টার্ট করে দিচ্ছি। Okay, so there are several factors that influence our learning process. These factors are broadly categorized into two groups. First one is called the motivation. Everyone join in time, okay? So first one is motivation, and
सेकेंड वन इज कैटेगराइज्ड एज ए फ्यू स्ट्रेटेजीज। पहले तुम लोग ज्वाइन ही कर लो, फिर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, नहीं तो पढ़ने के बीच में बार बार ज्वाइन करोगे तो कैसे चलेगा। এটা ঠিক করে দাও না সেটআপটা, এটা নেমে যাচ্ছে। আর জয়েন তো করেই যাচ্ছে কোন দিকে, একটা ফোন দরকার। ভারী হয়ে যায় তো। ভাই তো না এটা না। ঠিক আছে, থাক বলতে হবে থাক, ঠিক আছে এটা ওকে। Now board is clearly visible. Anyone response? Yes, sir. Okay. Please join in time in class. Okay. ज्वाइन कराते कराते फोन थोड़ा हिल गया थोड़ा, अब ठीक है। স্যার ক্যামেরাটা একটু বেশি দূরে হয়ে আছে। ক্যামেরা একটু বেশি দূরে হয়ে গেছে, ওকে। ওখানে দাও গিটার আটকানো, ठीक है। अब दिख रहा है बोर्ड? ঠিক আছে স্যার। Okay. So the motivation and few strategies. The learning strategies are divided into three types. Basically, one is the peer tutoring. স্যার এটাতে লাগবে? না থাকে ঠিক আছে। Okay. So we talking about উপরে কাটা আছে আমার উপরে। এইটা লাগিয়ে দাও, চেঞ্জ করে এটা নেমে যাচ্ছে। Okay, wait. ठीक है, board is clearly visible now. Okay. So we're talking about the factor that influencing learning. This factor is broadly categorized into two groups. First one is motivation and second one is few strategies. So now motivation is divided into two types. Okay, one is intrinsic motivation. What is motivation I discuss later. So motivation is basically two types. One is natural or intrinsic. So motivation is basically two types. One is natural or intrinsic, and another one is unnatural or extrinsic. So now the factor that influencing learning is basically two categories में divide किया पहले, फिर first category is motivation, which is again divided into two types. One is natural motivation or intrinsic motivation, and second one is unnatural motivation or extrinsic motivation. So we come later to the few strategies. First we discuss about the motivation. So what is motivation? Now what is motivation? Motivation basically is a process of arousing. So motivation basically a process. So it is a process by which arousing, directing
maintaining and controlling one interest in a certain activity. So basically motivation is a process of arousing, directing, maintaining and controlling one interest in a certain activity. अगर कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपका जो उत्साह है वो आना, फिर उस काम के वक्त आपको डायरेक्ट करना, एक दिशा दिखाना, फिर वो जो आप काम कर रहे हो उसको मेंटेन करना, मतलब काम करने की जो इच्छा है उसको मेंटेन करना, एंड जो आपका डायरेक्शन है उसको कंट्रोल करने को बोलते हैं क्या, मोटिवेशन. सो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, directing, maintaining and controlling one's interest in a certain activity or any kind of work. If you doing a work, if you feel low motivated or if you don't motivated, so you are not getting any kind of interest during doing this work. If you feel motivated for a certain kind of work, then you find a direction that may be or may helps you to doing this work in good manner, or in your result is better or you perform better in this work. So basically motivation is a process. Okay. Huh? Sir, board is not clearly visible. Board is not clearly visible. Yes, sir. Now clear board. ओके मैं बोल रहा हूँ ना, सुन लो फिर. मोटिवेशन पहले मैंने बोला क्या, फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग. दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स. वन इज मोटिवेशन. नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द मोटिवेशन. So what is motivation? Motivation is a process, okay, of arousing, directing, maintaining and controlling one's interest. Please put up your mic. One interest in a certain activity or any kind of work. So now motivation is a thing which is characterized by, so what are the characteristics of motivation? So motivation is psychological process. Okay, motivation is a psychological process. So now characteristics of motivation, when you see the characters of motivation, motivation is psychological process. So motivation arousing interest in learning. So secondly we see that the characteristics of the motivation is arousing interest in learning. So motivation क्या है, basically a psychological process, and secondly we also we can say that it arousing interest in learning process. Thirdly we also say that motivation also direct one's interest area or direct a process. Okay. Fourth we can say that motivation also control any kind of interest or any kind of work, and motivation is a basically goal directed behavior. So motivation, when the term come in mind, motivation, so motivation is a goal directed behavior. Why we motivated? हम मोटिवेट क्यों होते हैं? कोई भी काम को ठीक से करने के लिए हम मोटिवेट होते हैं. ठीक है, अगर एग्जाम में टॉप करना है तो आप क्या क्या देख के मोटिवेट हो सकते हो. वैसे ही चीज है, कुछ चीजों को हासिल करने के लिए ही हम मोटिवेट होते हैं. वो मोटिवेट इंट्रिंसिकली हो सकता है या फिर एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है.
तो मोटिवेशन क्या है पहले हमने बोल दिया, ठीक है, इंग्लिश में बोला, आप हिंदी में बोल रहे हो तो समझ जाना चाहिए। तो मोटिवेशन क्या है, अगर कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम में आपका जो डायरेक्शन होगा, आप कैसे उस काम को मेंटेन करोगे, उस काम को कैसे कंट्रोल करोगे, तो वही चीज मोटिवेशन के थ्रू आता है। सो बेसिकली मोटिवेशन इज टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज नेचुरल और intrinsic motivation. So what is natural or intrinsic motivation? So natural or intrinsic motivation, so now talking about natural or intrinsic motivation. So what is natural or intrinsic motivation? If motivation is directly linked with natural instinct, urges and implies of the organism. Okay, if the motivation is instinct, natural motivation is always come from own sake, for own sake. Okay, if the motivation is natural, then it may come from own sake. And secondly, we also say that the motivation is intrinsic. So इंस्टिंक्ट, अगर कोई भी मोटिवेशन और कोई भी काम करने का इच्छा आपकी खुद से आ रहा है, आपकी खुद की मन में जाग रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन आपकी खुद के अंदर से आ रहा है तो फिर उसको क्या कहते हैं, नेचुरल मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। So intrinsic motivation, so individual learn or doing any work for his own sake. So intrinsic motivation is basically a thing that the individual learn any kind of work or doing any kind of work for his own sake or for his own interest. If you're doing any kind of things of your own interest, then this is the called intrinsic motivation or internal motivation. Okay, so internal motivation, intrinsic motivation and natural motivation, all of these three are same thing. So what are the causes that internal motivations came? So firstly, we can say that if we want to fulfill our basic or elementary needs, so firstly intrinsic motivation came from basic or elementary needs. So firstly intrinsic motivation came from basic or elementary need. Like if you feel hungry for a long time, so you find some food by anyhow. अगर आप बेसिक और एलिमेंट्री मोटिवेशन क्या है, अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हो, खाना नहीं मिल रहा है या फिर आपका रहने की जगह नहीं है, तो वो क्या है, बेसिक नीड्स है हमारे, ठीक है, तो उसको फुलफिल करने के लिए मोटिवेशन अपने अंदर से ही आएगा। तो उसी चीज को क्या बोल रहा है, बेसिक और एलिमेंट्री नीड्स। इफ यू lacking of basic and elementary need, then your motivation come from internally or naturally. So secondly we say that that our intrinsic motivation or internal motivation also come from social or physical factors. So first you say that internal motivation may come from basic or elementary needs like hunger, shelter, or for food, for sex, like this. And secondly we say that the intrinsic motivation come from social and physical factors. So what are the social and physical factors? If you live in a society that you want to everyone respect you, so you have to do some work or you have to do some great things that people will admire you. So that's why these social and physical factors also helps you
in the motivates you intrinsically or naturally. So thirdly, we can also say that the internal motivation is also came from negative desire, negative drives. Okay, so what are the negative drives? These negative drives are those, these are the pains and unfulfillment desires or unpleasant sensory reflection, helplessness. If you live in a society where you feel very low, or if you are not like if you're doing a work, for example, we can say that also for like you see the Mary Kom picture where একটু পরে করছি। Okay, so thirdly we say that negative drives are the pain and helplessness in a society that also motivates you intrinsically. Okay, and another kind of motivation is extrinsic or unnatural motivation, the second type. Previously we say that the motivation is divided into two types. First one is natural motivation and second one is intrinsic motivation or extrinsic motivation or unnatural. So motivation is basically two type. First one is intrinsic, we discussed in previous time. So we discuss that intrinsic motivation. Now second types of motivation is extrinsic motivation or unnatural motivation. These types of motivation, extrinsic motivation or unnatural motivation, when the motivation coming from outside of the self. Okay, when the motivation coming from outside of the self, this is called extrinsic motivation. So what is extrinsic motivation? When motivation coming from outside of the self. So this is called extrinsic motivation or unnatural motivation. So first we talking about the natural motivation or intrinsic motivation that come from within or inner self, or we do any kind of work for our own sake. But in case of extrinsic motivation, the motivation coming from outside of the self, we do any kind of work for show off purpose or for incentive purpose. This is also known as incentive motivation, because we expect any kind of reward after doing any work. If motivation link with any kind of rewards that you get externally or from others, this is called extrinsic motivation or unnatural motivation. So it is basically based on incentive. So another name of extrinsic motivation is called incentive based motivation. Okay, we expect any kind of incentive after just doing that work, because of why the motivation basically comes from outside of the self. हमारे अंदर खुद की अंदर से इस टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ मोटिवेशन नहीं आ रहा है, किसी दूसरे की काम को फुलफिल करने के लिए ही हमारे अंदर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आ रहा है. ठीक है, अगर किसी कंपटीशन में आप भाग ले रहे हो और आपको सबके सामने फर्स्ट आना है, ठीक है,
कोई प्राइज की वजह से आप कोई गेम खेल रहे हो या जीतने की कोशिश कर रहे हो तो वो एक्सटेंसिव मोटिवेशन के अंदर आ जाएगा। अगर किसी काम करने के बदले में आपको पैसा मिल रहा है तो वो एक्सटेंसिव मोटिवेशन के अंदर आ जाएगा। आपका अगर लैंग्वेज दूसरा है, सपोज मेरा लैंग्वेज ऐसे मदर लैंग्वेज बंगाली है, ठीक है, मदर टंग बंगाली है, लेकिन मैं आपको पढ़ाने के लिए हिंदी या इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरा एक्सटेंसिव मोटिवेशन है। इस मोटिवेशन खुद के अंदर से नहीं आ रहा है, किसी चीज को करने के लिए ही हम बोल रहे हैं। तो डिफरेंस पता चल गया ना एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक का। किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकते हो, नहीं तो हम दूसरे टॉपिक में मूव करेंगे। Anyone having any question? Please respond. If any kind of doubt. No, sir. It's clear. Okay. So now we move to our next topic. Previously we say that the factor that influencing our learning is basically categorized into two groups. First one is motivation and second one is a few strategies. Okay. So first one is motivation and second one is few strategies. So now what are the strategies that we use to influence our learning pattern? There are basically three kinds of strategies we used to influencing our learning pattern. First one is peer tutoring. Okay. So strategies that are used in learning. First one is peer tutoring. Second one is cooperative learning, and third one is collaborative learning. Okay, basically three types of learning strategies that are used in education. So first one is peer tutoring, second one is cooperative learning, and third one is collaborative learning. So what is peer tutoring? Peer tutoring क्या है? अगर सपोज क्लास के अंदर टीचर है और बहुत सारे बच्चे हैं, ए बी सी डी ई एफ करके सारे बच्चे हैं, ठीक है। अगर हम सारे बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दे और एक बच्चा को हेड बना दे उस ग्रुप का, ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ करके सब बच्चे हैं इधर एक ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप में क्या है, वैसे ही जी एच आई जे के एल करके बच्चे, ठीक है। ग्रुप में हम डिवाइड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक बच्चे को हेड बनाकर उस ग्रुप का पूरा जो टीचिंग प्रोसेस है वो कंडक्ट कर रहे हैं। एक बच्चा ही उस क्लास को पढ़ा रहा है और एक बच्चे में ही क्या वो चीजें डिस्कस हो रहे हैं। इफ वन मेंबर of the student will discuss about any kind of topic between these peers or peer groups, this is called peer tutoring. Here the role of the teacher is just observing those process of teaching, and the teacher also helps in selecting the student who will teach the class. Basically teacher here acting as a just observer, and the role is teacher is passive, teacher is not active here. Here student is active member, or student will conduct that class as a teacher. Okay, so यहाँ का basically इस peer group में student ही discuss कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, और क्या टीचर का रोल क्या होगा इस क्लास में, पैसिव रोल होगा। टीचर हेल्प करेगा सिलेक्ट करने के लिए कौन सा बच्चा क्लास में पढ़ाएगा, एंड जस्ट ऑब्जर्व करेगा क्लास कैसे मेंटेन हो रहा है। तो अगर
पेयर के ग्रुप में ही अगर स्टूडेंट की बीच में ही कोई आके स्टूडेंट को ही पढ़ा रहा है तो वो क्या हो गया, पीयर ट्यूटरिंग. सेकेंड वन इज cooperative learning. If like for example we can say that project method, sorry, group project method. ग्रुप प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, एक प्रोजेक्ट को सारे बच्चे मिलके कंप्लीट कर रहे हैं. सो यहाँ पर बेसिकली ये देखा जा रहा है किसी एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे पार्ट होते हैं, डाटा कलेक्शन से लेके उसकी बारे में थोड़ा प्रीवियस नॉलेज प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना होता है. तो सारे एक ग्रुप में डिवाइड कर, पहले बच्चों को एक ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, फिर सारे बच्चे मिलके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं. कोई एक बच्चा उस प्रोजेक्ट में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सारे मिलके अगर कोई काम को संपन्न कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव, बाय द हेल्प ऑफ द ऑल स्टूडेंट और ऑल ग्रुप मेंबर. यहाँ क्या था, पीयर ट्यूटरिंग में एक बच्चा इन्वॉल्व था जो पढ़ा रहा था. यहाँ पर क्या है, सारे मिलके एक काम को कर रहे हैं. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग. एंड थर्ड वन इज कोलैबोरेटिव लर्निंग. कोलैबोरेशन के बारे में तो सुना ही होगा. यहाँ पर क्या है, इस ग्रुप में कोलैबोरेटिव लर्निंग is basically a peer tutoring or also a cooperative learning. Okay, both. So in collaborative learning, यहाँ पर जब वाइगोट्स्की का जो मतवाद था ना, वहां पर बोला गया था कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है, ZPD है और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्लास में जो बच्चा सबसे होशियार है वही किसी दूसरे बच्चों को हेल्प कर रहा है. कोई भी स्टेज में अगर अटक गया हो, तो मैथ की कोई प्रॉब्लम में, साइंस की कोई प्रॉब्लम में अटक गया हो, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है, जो मोर नॉलेजेबल है वही क्या कर रहा है, दूसरे बच्चों को हेल्प कर रहा है. एक बच्चे का कोई प्रॉब्लम है तो वो पास वाले बच्चे से हेल्प लेके समझ रहा है कोई चीज, तो उसको क्या कहते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग. सो लर्निंग विल बी ऑकर इन कोलैबोरेटिव मैनर, लाइक वन हेल्प्स on another problem. If one student help in solving another student's problem, so this is called collaborative learning. In peer tutoring, one student will be the head in this group and conduct the teaching learning method. In cooperative learning, every participant or every group member will be help or will be share their knowledge to each member. So all of these group members are fully active and participate for the particular project or particular work. In ZPD, in collaborative learning, one student help another student by giving a solution or by giving a cues like this. Okay, these are the three strategies that are generally used in teaching learning method or in school. First one is peer tutoring, second one is cooperative learning, and third one is collaborative learning. Clear? So why call that is ZPD? According to the Vygotsky, you read in first semester that Vygotsky also called this collaborative learning as a ZPD or zone of proximal development. Okay. So these are the three strategies that you may remember for your examination. First one is peer tutoring, second one is cooperative learning. In peer tutoring, one of the group member acting as the head of this group and conduct the teaching learning process. In cooperative learning, all the group members are active and participate on the particular work or the particular project. Third, collaborative learning. The collaborative learning is basically collaboration between the two students or the group, where one group member is more knowledgeable, so he or she will solve the problem of the other member. Okay, clear those three strategies? If any doubt, please tell me.
किसी को कोई डाउट है स्ट्रेटजीज के बारे में? ओके, चलो बस आज यही तक रहने देते हैं, और फिर कल देखेंगे इसके बारे में थोड़ा, ठीक है? आज ऑफिस मेंबर थोड़ा कम है इधर, तो थैंक यू। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो आज क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। ছেড়ে রাখ করে ছেড়ে দাও দাদা, একলা কতক্ষণ বসতে হবে।